So we are going to continue yesterday's discussion about how we studied collisions in general. Model of the fact कि हमारे पास वो diagram थी by which we represented the velocities and under the consideration whether the frame was a lab frame or whether the frame was center of mass frame. So center of mass frame में सिर्फ क्या होता है वहाँ zero होता है center of. So दो frames होती हैं, ठीक है? So we took both of these considerations, and we accordingly represented. There were two cases. If I draw the figure, if you remember, हमारे पास दो figure cases थे. This one and this one. एक में theta max था, the other was like this. So I'll not. So if it's V naught, if it's V बड़ा V, and this is theta, and this is V naught. So in both cases, how we the particles की velocity V and the triangle vectors, it's for and how we could see velocity. And we got the expression for cos theta, particular cos theta, and in terms of V and V naught. In terms of, and for a particular case, we had two cases. Either V naught is less than V, or V naught is greater than V. This is now in physical situation, जो हमारे पास होती है, कोई भी system होता है, whichever system is there. So there is energy is dissipated, and it's not necessarily, for example, in case of two body problem, ठीक है, M1 V1 अगर collision होता है between two particles, say elastic collisions, simply mass अगर same होगा, only velocities will get exchanged, which we have studied in earlier classes, है ना? And if the mass is जिससे collide करेगा, it's very high, the particle will recoil back, है ना? And simple considerations of two equations, law of conservation of mass and energy को लेते हुए we could explain that thing. अब ये है कि जो dissipation of energy है ना, for if the particles may not necessarily be two which are colliding, they may be more than 2, 3, 4, and so there are many considerations to the fact how we can and there's also a fact if the system is isotropic. If the system is isotropic means all the components are equally resolved in all directions. For example, अगर आपका कोई component है एक direction में ना ज़्यादा जाएगा ना कम जाएगा, so equally. So if the collisions and the masses are same and we assume that the space is isotropic, the dissipation of energy है ना, that should also be sort of isotropic. So this is an assumption if you take it that way. So this is a simplified assumption. अब ये कि कोई भी C system है या center of mass system है, if the collisions are happening elastic, so what's the dissipation of energy? So how can calculate it if the particles are randomly oriented, if they are randomly. So for example, you can have simply जो your earlier class अगर आपने कोई problem की होगी ना solid angle की या flux कैसे निकालते हैं, we'll take some इसका कोण में कितना फ्लक्स निकला है, and अगर हमारा कोई वॉल्यूम होगा, if you take a spherical volume, then you integrate accordingly. So in the same we can have those consideration if the space is isotropic and the particles entering the solid angle DO is proportional to or equal to, ये normally है solid angle का ये है ना. Now अब solid angle it might traverse in the whole of this circumference. तो अगर we multiply it by 2 pi sin theta d theta, du is equal to 2 pi sin theta naught d theta naught. Or since it's du by 4 pi, ये 2 pi कट जाएगा, so you can have 1 by 2 sin theta naught and d theta naught. So then you can integrate accordingly theta का value in this thing.
कहाँ से 0 to pi 0 to 2 pi जो भी है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द होल ऑफ जो है इंटीग्रेशन इन द सिस्टम। अब ये है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास L सिस्टम इज obtained by approach, सो लेट अस कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द L सिस्टम। सो अगर हम L सिस्टम मींस व्हाट, लैब initially, and if we want to calculate the energy in the lab frame, तो lab frame में तो जो for example will scale, if you follow the book, this book, so these are two velocities of body a particle at rest and some velocity v, जो हमने in terms of triangle law दिखाई थी, v naught v। So if it's like that, तो v square can also be written as v naught square plus v square 2v naught v cos of theta, है ना। एक्चुअली आएगा बेसिकली v naught v dot of v naught v, दो बार आएगा ना, ये v dot v है, इसका v dot v आएगा। इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड इट ज्योमेट्रिकली, तो यू कैन सी इट, एक बार आएगा v स्क्वायर, एक दूसरी फिर आएगी, दो टर्म्स आएंगे, दैट विल बी 2v naught। सो इट्स बेसिकली ओरिएंटेशन ऑफ दिस एंगल विज गॉसियन, इन दो का ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है ये वेलोसिटी, ठीक है। एक तो इंडिविजुअली भी डिपेंड करता है एंड ऑल्सो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल टू पार्टिकल्स आर स्ट्राइकिंग, ठीक है, सो एट व्हाट एंगल द कोलिजन्स नेट वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। द पार्टिकल विल कम एंड इट विल कम बैक, otherwise the particle will come but it will have some orientation vis-a-vis the initial velocity of the particle। so इसका मतलब ये है। तो इन द सेम वे इसी तरह d cos थीटा को हम we can write d cos theta can also be written as 2v naught v, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखो ये इसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ से है, इसका डिफरेंशिएशन d cos थीटा आएगा, v नॉट का ये 2v नॉट भी अपनी जगह आएगा, यहाँ भी 2v आएगा, दिस विल इट्स एट रेस्ट, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। सो 2v यहाँ डिफरेंशिएशन में आएगा, 2v अपना है, सो 2v v नॉट यू कैन डू द डिनोमिनेटर, सो यू कैन राइट इट दिस वे आल्सो। And using the kinetic energy is basically this, and where m1 and m2 depending upon which particle is under concentration, and substituting in the equation 16.7 and substituting in the equation 16.7। so इस equation में substitute करना है, basically it is the solid angle। अब ये दो पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है, तो फिर जब आफ्टर कोलिजन है ना, ये कहाँ से जाएंगे, उसका जो स्प्रेड होगा ना, इट विल बी अलोंग होल ऑफ द सॉलिड एंगल, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सो वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग द बुक सेज इफ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, इसका इक्वेशन का नंबर है 16.7 ऑन दिस वन। टोटल तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली किसका, 1/2 एम वी नॉट वी, ये तो है, ये स्प्रेड है इसका cos थीटा बेसिकली। 1 second, we find the required distribution is this, this is the required distribution of this thing। The particles after they have been they collide, there is a collision between two particles, and if you geometrically represent the velocities of particles by these triangle vectors, and you have to see the total spread क्या आएगा एनर्जी सिस्टम क्या आएगा। अब इसी तरह काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कहाँ से, इट कैन वेरी फ्रॉम T मिनिमम which is twice 1/2, ये तो मिनिमम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, मतलब इसका मतलब है कि आफ्टर ये जो कोलिजन है, इफ दे विल वेलोसिटीज मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन,
हाँ तो ये आएगा सो इन्हीं दो कॉन्फ़िगरेशन, बिटवीन दीज टू कॉन्फ़िगरेशन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मॉडल द फैक्ट दैट आफ्टर कोलिजन्स अगर एक ही पार्टिकल नेट मोमेंटम टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर एक मास है उसकी वेलोसिटी एक m1 v1 थी, उसकी दूसरी v2 थी, ठीक है, आफ्टर कोलिजन किसी की कम होगी किसी की ज्यादा होगी, बट नेट विल कम आउट विच नो दोस कंसिडरेशन। एंड इंडिविजुअली जो पार्टिकल की वेलोसिटी कैन गो फ्रॉम, इट कैन बी मैक्सिमम या तो मिनिमम इतना होगा, या इफ दे विल सिंपली ऐड। अब ये है कि टोटल वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं होगी, इसका मतलब कि समटाइम्स कोई पार्टिकल ब्रेक करेगा ना, दो पार्टिकल्स या मोर देन टू पार्टिकल्स, the mass will decrease but velocity will increase, so that net amount will be constant. So this is what the book says. When the particle disintegrates in more than two parts, जो मैं कह रहा था, I mean the disintegration of particles in more than two parts. अब more than two जरूरी नहीं, अब two part हमारे लिए two body problem हम स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड विद द सेंट्रली बाउंडेड पोटेंशियल, टू बॉडी प्रॉब्लम, रिड्यूस्ड मास आता था, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। सो इट्स नॉट नेसेसरी इट्स मोर देन टू पार्ट्स, इन प्रिंसिपल यू कैन टेक मोर देन टू पार्टिकल्स, थ्री पार्टिकल्स, एन पार्टिकल्स, है ना, एंड दैट्स इट। In particular, the energies of these particles in the C system do not have determinate values. इसका मतलब क्या है? Energies of particle in the C system, do not have determinate values. इसका मतलब क्या है? शाबाश। C system में, center of mass system में इसका value we cannot सिस्टम में, क्योंकि रेस्ट पे होता है ना, सेंटर ऑफ मास इज सपोज्ड टू बी एट रेस्ट, सो m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू 0, सो यू आर टेकिंग देम लैब फ्रेम इनटू कंसीडरेशन। अब ये है कि हमारे पास ये है कि if you go back to, if you start of the book, we just started the total energy of the system, हमारे पास इक्वेशन थी E1 is equal to E1I plus P naught square by 2m1 plus E2I P naught square by 2m2I, 2s m2, और जो एप्सिलॉन डिसिपेशन एनर्जी हमारे पास थी, इट वाज बेसिकली EI minus E1I minus E1 E2I. So total energy minus the energy of the individual particles will give us the dissipation part of the entire process. Process कौन सा है? Collision of particles. It may be collision of one particles or many particles. But if you want to calculate the total energy dissipation क्या है? It's the total energy of the particle. It's the energy of the particle of one system. ये second system है। अब इसी argument को if we are going to import this argumentation here, तो ये है T10, energy of the particle T10 will be m minus m1, m minus m1 हो गया इन दोनों का मास का डिफरेंस, डिवाइडेड बाई EI minus E1I minus EI prime by m, where m is the mass of primary particle. So basically ये हम करेंगे, if you want to write it, if I just, इसकी बुक की लास्ट इक्वेशन है, मैक्सिमम और मिनिमम हम करते थे ना, the energy of the particle may be either be which I just rubbed up, either it may be maximum or it may be minimum. कहाँ पर रखा था मैंने? हाँ, maximum and T max लिया था ना मैंने, I just took T max 1/2m V naught, इतना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। T मिनिमम इज
So agar T max and T minimum is the total energy of the system which is going to be dissipated. So if you want to see the dissipation of that in terms of this argumentation, so you can say T max will come out to be m minus m 1 divided by epsilon into m. तो बेसिकली ये एप्सिलॉन है. अब एप्सिलॉन को यहाँ लाओ, सो यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंस. ये है ना इक्विवेलेंस इस एप्सिलॉन की. अब E इज द energy of this particle or kinetic energy of the particle. So if you want to write P naught in terms of m minus m1, so you can do this argumentation and you can say it's equal to this. Thoda sa we have to write what is the T maximum and what is the T minimum, and mv को in terms of लिखना है in terms of energy, E को further लिखना है in terms of T. ठीक है, and do the thing that you can say if you want to write T maximum या T minimum, this is the dissipation energy of the system. 2 particle system या n particle system, इसी तरह आप minimum के लिए भी कर सकते हैं. Now we are coming to our part. This was the completion of yesterday's thing. आज का जो discussion है हमारा पास, we will have again in your earlier classes you might have studied elastic collisions, है ना. अब ये elastic collisions आपने पढ़े हैं. Elastic, the word is very perfect elastic है ना. We have there, if you remember earlier classes, वो coefficient of restitution हमने define किया. That's the collision of particles before they are colliding and after they are before and after collision. That should be equivalent to 1. This means there will be no dissipation of energy, there will be no change of mass. ठीक है. So that अगर दो particles हैं, एक का mass m1 m2 है, if the two masses will be same, तो v1 will be equivalent to v1 will be equivalent to v2. So this is the way we define perfect elastic collision. अब ये जो हमारी the earlier understanding of collisions है, ये है कि we are going to study it in terms of the diagrammatics. Diagrammatics of what? जो कल की हमने की. In terms of components. So first, before we are going to show the diagrammatics, so the collisions, elastic collisions, you know, I'll just straight away so normally जो elastic collisions है, we define grossly as there is no change of internal energy. No change of internal energy before and after collision. जो epsilon है, जो that will come out to be 0. वो जो epsilon जो last वाली term हमारी थी, epsilon is called t minus कुछ, ठीक है. So that should come out to be 0. So if we apply law of conservation of energy, so we can agree, even if the change of energy may be small, so in case of elastic collisions, we are going to neglect those considerations. अब ये हमारे पास ये है कि velocity of the particle before collisions are related
मतलब इन लैब सिस्टम अगर हम लेंगे, इन लैब सिस्टम velocity of collisions, velocity of particles before collisions or before collision. Their velocities v1 and v2 in laboratory system. So v1 0 will be equivalent to m2v divided by m1 plus m2. ये बेसिकली ये है ना, it's m1 v1 plus m2 v2. This is equivalent to m1 plus m2 into, it's like two body problem है ना, ये है ना, m1 v1 plus m2 v2 भी करते हैं ना आप ऐसे, m is basically m1 plus, है ना, you can write, so v can be written like this, v can be written like this, m1 v1 m1 v1 m2 v2 divided by m1 plus m2, है ना. अब ये है कि since one of the particles अगर at when the, हाँ you just see it, if the particles has started at collision, रेस्ट पे स्टार्ट किया तो एक इसमें जीरो आएगा ना, so you can write this v1 0, you can write it as this, ठीक है. So in the same way you can write v2 0 depends upon the first particle was at rest, यहाँ में second particle was at rest, and the sign का factor इसलिए आता है कि plus minus, the particle is moving towards the particle, or so you can take coordinates accordingly. अगर ये वहाँ की तरफ जा रहा है तो minus plus है, तो यहाँ की तरफ जा रहा है, so that's so after collision, yeah, we are taking before collision. हाँ वही है. वही considerations of law of conservation of momentum and of two particles will remain same from these considerations. Now this is before collision. Now if we take after collision, so what he has done, he has distinguished the velocities before collision and after collision by primes. Primes मतलब उसी चीज को अगर ये मान से जीरो तक गया, आप इसको लिखा है इसी in terms of, इसकी वेलोसिटी है v prime 1 0, and सिर्फ लिखा यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर will denote the direction after collision. And v2 prime is equivalent to है ना. यहाँ आप देखो, here it's m2, here it's m1, here it's m2, here it's ये माइनस का फैक्टर, ठीक है. And only the thing you have used unit vector here. This is before collision, this is after collision of two particle system, or systems we are colliding. Now we are coming back to, in order to return to lab frame, lab system. अब ये है कि there are lot of problems in mechanics or collisions, so you should know how to fix the lab frame or center of mass frame before or after collisions, ठीक है. That helps us in solving many problems. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सेट करनी होती ना, first you should know what is the lab frame and what is the center of mass frame. And lab frame and center of mass frame में plus minus कहाँ velocity आ रही है, तो then the problem gets, at least you have to first state the problem, कैसे उसको कैसे लिखना है, जैसे सेट करना है ना Lagrangian of the system first, how the problem is done. The same in lab system and center of mass system में भी चीज़ें. तो
तो लैब सिस्टम में आफ्टर कोलिजन V1 प्राइम इज इक्वल टू ये तो इसका अपना आएगा एक और आएगा ये वाला। So what he says कि अगर हम लैब सिस्टम को करना है वो मस्ट ऐड दीज एक्सप्रेशंस, ऐड एक्सप्रेशन करना है हमको, वी हैव टू ऐड द एक्सप्रेशंस v वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी हमको ऐड करना है इन द एक्सप्रेशन। सो m1 v1 प्लस m2 v2 ये तो इसका अपना है मास v1 है, बट वी आर एडिंग फॉर द लैब फ्रेम इसका सेंटर ऑफ मास का भी ये एक्सप्रेशन। यू कैन डू द सेम थिंग फॉर v2 प्राइम। यहाँ m2 है, अब यह आएगा m1 v n नॉट m1 प्लस m2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2 by m1 plus m2। So again we are going to do another step। अब यह है कि बेसिकली हमको क्या चाहिए, हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन जो आप अर्लियर क्लास में प्रॉब्लम्स करते हैं, मतलब व्हाट इज द कोलिजन ऑफ पार्टिकल, आप जब बिफोर और आफ्टर कोलिजन्स, इफ टू पैरामीटर्स गिवन व्हाट इज द थर्ड पैरामीटर, इफ v is given m is given तो what is the m, मास कैसे निकालेंगे, v1 कैसे निकालेंगे। सो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग इन द अर्लियर क्लास। अब उसी चीज को सिंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है मगर इसके अलावा इसके पास कोई और इंफॉर्मेशन द सिस्टम नहीं दे रहा है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू सम सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ये है कि मल्टीप्लाइंग दिस बाय m1 एंड दिस इक्वेशन बाय m2, ठीक है। तो ये आएगा m1 m2, ठीक है। तो ये आएगा m1, ये आएगा m2, एंड फर्दर दीज इक्वेशंस विल टेक द फॉर्म, दे विल टेक द फॉर्म, क्या फॉर्म है, जस्ट राइट इट हियर। So it is P1 prime आएगा कि नहीं, हाँ आप देखिए। So it's M1 V1 prime, it's P1 prime, it's MV not MVN not। अभी मैं बताऊँ। So M we are going to write it as M1 M2 divided by M1 plus M2। So you can write this M1 M2 divided by M1 plus M2 के बदले हमने लिखा M, बाकी अपना इक्वेशन लिखिए प्लस M1, ये M1 V1 आएगा P1, M2 V2 आएगा P2, हाँ P1 plus P2 divided by M1 plus M2। Similarly, P2 prime we can take as minus MVN naught plus M2 P1 plus P2। Now we are going to use yesterday's exercise, जो हमने velocities, different velocities of the particles को by different parts of the triangles denote किया था, V naught, V and V, ठीक है। So that we are doing all this because it should be something extra information, we should extract some, because these equations are not sufficient, these इससे पहली वाली equations, हमको कुछ extra extract करना है। At the end our aim is to find the collisions of the particles before and after collisions, क्या velocity, क्या mass, क्या changes, and even in when you go to, अगर एक तो ये collisions हो गए normal elastic collisions,
न्यूक्लियर फिजिक्स के कोलिजन्स में है ना मॉडुलो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, सो दीज फॉर्मूला स्टिल होल्ड, ठीक है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन को तो अब ये करेंगे काम, हमको ये P1 के साथ डिनोट करेंगे, दिस इज O, दिस इज C, this is O, and OC is denoted as AO is denoted as OB is denoted as this. इसको जो हमने वो एड टर्म की थी ना सेंटर ऑफ मास की टर्म, ज्योमेट्रिकली वी आर गोइंग टू डिनोट इट एज दिस एज AO, एंड सेंटर ऑफ मास टर्म वी एडेड फॉर द अदर पार्टिकल, सो इसको हम डिनोट करेंगे ज्योमेट्रिकली बाय दिस AO एंड OB. So while you doing this entire exercise, you will see it will help us later. अब ये है कि we can again take in more detail whether particle M2 say is at rest before collision. M2 is at rest. अगर M2 रेस्ट पे है बिफोर कोलिजन, देन डिस्टेंस OB जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज M2 क्या है, इफ द पार्टिकल 2 इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन तो वन ऑफ देम विल बी 0, है ना, आप देखो यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस. M2P1 divided by M1 plus M2. M2P1 divided by हाँ इसका है ना ये M2P1, P1 is M1V1 है ना, तो M1 M2 को हम डिनोट करेंगे M के साथ, तो ये अपना नहीं got my point. So if you assume that one of the particle was at rest before collisions, for example, this P2 will be 0. So इसका मतलब है M1 P1 divided by M1 plus M2. M1 M2 divide M1 M2 divided by M1 M plus 2, इसको हम M के साथ डिनोट करेंगे. So we can also denote it as M. This is what I say. अब ये है कि important point, जिस तरह हम नहीं पढ़ा कल, we had two cases. One case was B1 less than B2, other was B1 नहीं था, B था शायद खाली. हाँ V0 था. Yesterday we had V0 less than B and V0 greater than B, and those corresponding to the different pictures. तो here what we are going to do, जो हमारे masses of the particles हैं before or after collisions, ठीक है, normally हम लेते हैं the simplest case was M1 is equal to M2. Then simply velocities will get exchanged before or after collisions. But if the masses are not same, there may be value of the masses may be different. One of the masses may be greater than the other, or it will be less than the other. So how we can find the expression of the elastic collisions? Expression, how we find it? Modulo that we have added this center of mass term. ये lab frame है, this is also center of mass term.
ये अपनी टर्म है. एंड ज्योमेट्रिकली इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, दिस इज वी हैव डन. यहाँ तक, हाँ यहाँ तक ठीक है. एंड द एंगल्स θ1 and θ2. नाउ अगेन I'll just write it in terms of diagrams जो yesterday हमारी हमने कल किया था ना, अगर वो V1 is greater than V2 और V1 is less than, ये अंदर आएगा, and if it's greater than V2 ये बाहर जाएगा सर्कल से. So in the same way that those two cases may be represented like this. थोड़ा सा to study this you should also have some, उसको कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं, ज्योमेट्री के साथ शुगुफ होना चाहिए. शुगुफ समझते हैं? यू शुड नो समथिंग अबाउट डूइंग थिंग्स. जिस तरह आपने कॉनिक्स में है ना, देयर वाज हैवी यूज ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम ओनली सॉल्व्ड व्हेन वी हैव नॉलेज ऑफ कॉनिक सेक्शंस, इलिप्स, हाइपरबोला, ये इलिप्स. इन द सेम वे ये यू शुड नो फील कंफर्टेबल विद ज्योमेट्रिकल फिगर्स. ठीक है. एंड जिस तरह आप वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसी तरह हम वो पार्टिकल्स की वेलोसिटीज एंड मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं बाय डिफरेंट, दिस इज मोमेंटम बाय दिस लाइन, दिस बाय दिस लाइन. तो इसमें आप दो केसेस हैं, इधर m1 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1. तो इन फर्स्ट केस m1 इज ग्रेटर देन m2, सो दिस इज एंगल θ1. This angle is chi. This is θ2, and this is P2. ठीक है. And you can write it like this. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, we are basically sketching the collision processes on pictorially here. अब उसमें जो ओरिएंटेशन है आफ्टर कोलिजन, व्हेन इट कैन बी मैक्सिमम एंड व्हेन इट कैन बी मैक्सिमम, तो इसका एंगल कितना होगा यहाँ पर. ठीक है. इन दिस केस मिनिमम ऐसे होगा, थीटा मैक्स एंड थीटा मिनिमम क्या होगा. दिस इज θ1, दिस इज थीटा मैक्स, दिस इज A, दिस इज O, this is this is C, this is P1 prime, this is chi, this is θ2, and this is P2 prime. ठीक है. and ratio of AO by OB, AO by OB is represented by यहाँ से यहाँ तक m1 m1 by m2. अब अगर ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन जो भी हमने दी है फॉर टू पार्टिकल्स, सो एंगल एट द सेंटर इज डिनोटेड एज chi. ये वाला एंगल, दिस एंगल. सो आई जस्ट राइट इट. सो दिस एंगल इज डिनोटेड एज chi, this angle, which gives the direction of n naught, n naught की डायरेक्शन देते हैं. ये n naught हमने डिनोट किया था ना, क्यों, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. ये एक तो लैफ्रेन है, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऐड करके ये हमारा ये डायरेक्शन दे रहा था आफ्टर कोलिजन. इट इज, दीज आर टू इक्वेशंस. एक हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्राइम, बिफोर कोलिजन हो गया m1 v1, बट आफ्टर कोलिजन है ये m1 v1 प्राइम, m1 v1 प्राइम, v1 इज ट्रांसफॉर्म टू v1 प्राइम, v2 इज ट्रांसफॉर्म टू, सो दैट्स व्हाई दिस डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड.
उसका डायरेक्शन क्या क्या होगा कोलिजन के बाद अगर दो मासेस. सो दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय दिस O and this is given by this direction is given. अगर इसको pictorially हम देखेंगे, we are trying to, this sky gives that direction, this sky gives that direction, this sky gives that direction, that direction of unit vector before and after. This is after collision के बाद. वो जो slant angle between two particles after collision वो क्या होगा, that will be chi, represented pictorially here. ठीक है. अब वो केसेस, इन फर्स्ट केस chi can be this, if mass of this is less than this, the diagram will take this form, and in the second case the diagram will take this form. ठीक है. So this is the point. Again जिस तरह हमने कहा था कल, tan of theta हम निकालेंगे, tan of theta 1, tan of theta 1, अगर theta 1 एंगल है, tan थीटा हो गया sin थीटा 1 बाय cos थीटा 1. sin थीटा 1 है ना, sin थीटा 1, थीटा 1 ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहां पर, ये सो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज दिस, so we can write this, we can also write in terms of chi angle. आप इसको just see it at your place. We can also write this side in terms of, basically it's a right angle triangle, but still since this side is common to both, we can write this side in terms of this chi. So you can have it in terms of, ये यहां से यहां तक m1 है, यहां से यहां तक m2 है, m2 chi, m2 sin of chi, sorry. And the second one is cos of theta 1, cos of theta 1 ये है यहाँ से. So we have to add ये वाला term भी plus this thing. So we'll get two things in the base. Base में एक ये वाला एंगल आएगा अपना cos angle plus this यहाँ से यहाँ तक distance. So this is represented by यहाँ से यहाँ तक distance in figure 1. It's represented by m1 plus second in terms of cos of chi. You can write it as cos of chi. Okay, so this is this much, and the theta angle, the theta angle इसके पास है theta 2, one is theta 1, the other is theta 2. theta 2 को इसने represent किया है 1/2 pi minus x. Theta 2 is represented as pi minus, actually ये आएगा, for example this is a right angle triangle, theta 1 plus chi plus this angle is equal to 180 degree. आपको सिर्फ दिखाना है chi is equal to, जो chi है ना, chi का वैल्यू, chi is equal to theta by 2. So if you do it, for 5-10 minutes, 10 minutes. Just complete it. So otherwise you just complete your construction at your place. ठीक है. How we can represent, so if you have this angle and this angle, ठीक है, ये representation हम करेंगे. So I'm going to stop, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 minutes. So I'm giving you sort of motivation that before you are going to yourself study book, you should not get demotivated from step A to step B. You should convince yourself. ठीक है, अदरवाइज आप खुद से देखोगे, it will take a lot of time. How he has represented collisions after collisions and pictorially कैसे दिखाया. For अब इसमें दो ही केस याद रखने, एक m1 is greater than m2, m1 is less than, m1 is greater than m2, तो this figure will represent that. m1 is less than, this figure will represent that, and these are different angles, and this is represented by m1, m2. अगर आप ऐसे है तो we can write, अब ये थोड़ा सा आपको मैं ये दे रहा हूं, ये आप अपनी जगह you just try to see, you do some algebra and see whether V1 can be represented in terms of V. ये कुछ नहीं, ये M1 V1 plus M2 V prime is equal to M1 plus M2 cos, because it's also dependent upon cos of angle. So that's why ये cos of chi आएगा, right?
ये m1 plus m2 dot of m1 plus m2 dot आएगा, फिर you do the entire this thing, then it will give us the thing. इस तरह v2 prime will be equivalent to, so if you remember, these are sort of equations similar to what you have done in your earlier classes. अब सिर्फ वहाँ chi नहीं था, when you studied collisions, तो ऐसा ही आ रहा था ना expression leaving this. We have denoted in terms of chi. Chi can be written in terms of m1, m2. That's it. And the condition is theta 1 plus theta 2 is greater than pi, and m1 is less than m2. Then theta 1 plus theta 2 is less than half of pi. So in case if m1 is greater than less than m2, theta 1 plus theta 2 is less than half of pi. If theta 1 plus theta 2 is, so then in case m1 is greater than m2. अब ये कि I'll just stop here the thing that अगर जिस तरह आप इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन कोलिजन्स करते हैं तो वहां पर you had an expression like similar to this velocities after collisions. It came out to be like this: m1 plus m2 and v2 prime is equivalent to, आ रहा था कि नहीं in your earlier classes? Huh? But you have to do the same thing, but the argumentation is like this. You are taking lab frame and center of mass. ये lab frame है after collision, and this is the term we have added to it. And then we have pictorially used these diagrammatics here, and from that you have got these two equations. And these two conditions लेते लेते we are arriving at this thing. And you can also have, for example, अगर आपके पास E2 max, maximum kinetic energy कैसे आएगी? 1/2 m2 v2 square into max square. V max कितना आएगा? V max, इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए V max, तो it will come out to be like this: m1 m. This is also known to you. So we have done all of this thing here. So we have, the argumentation is only that we are doing the same thing following this logic and arriving at this collisions before and after, elastic collision before and after. And the last thing which I'll stop, ये थोड़ा stop, I'll just, ये diagram जो है, ये तो diagram. So if it's this, P1 prime, ये P2 prime है, ये chi angle है, ये theta 1 है, ये theta 2 है, ठीक है? This is O. अब यह है कि आपको अपनी जगह, you have to convince yourself theta 1 is equal to 1/2 chi, because it was very much used here. Here, ये convince आप अपनी जगह करो अपने आप को. Can we write theta 1 in terms of chi? So if it's a right angle triangle, ठीक है, ये पता है आपको, it's 90 plus this is equal to pi. पर can we write chi in terms of theta by 2? अगर हम लिख सकते हैं, then we can write this in terms of this. So you have to, this is an exercise you have to do. In the same way, theta 2 can be written as pi minus x. इस तरह v1 can be written in terms of v cos of 1/2 chi, and v2 prime can also be written as chi. And after collision, the particles move at right angles to each other. If you follow these conditions, they should move at right angles to each other.
So I'll stop here with the fact that the steps which I have only given a cursory, I have shown you the road block. So at your place it will take some time to convince yourself on each and every step. हाँ वाकई ये ऐसे ही है from diagrams also. पिछली वाली थी for V1 is equal to V2, यहाँ था M1 is less than M2 or M2 is greater than M1. Elastic collisions of two types. Normally easiest क्या है? M1 is equal to M2. The velocities will get exchanged. If M is greater than M1 or M is less than M2, so there will be some slant angle after collision. ठीक है? वो सब कुछ consideration करके वो have to do this. ठीक है? चलो.